प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जितना कवर होगा। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो आप जिस सब्जेक्ट में एमडी है, यानी होम्योपैथिक सब्जेक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से तो आ ही रहा है पेपर, क्योंकि वो कॉमन है, जीडीएमओज और उनके लिए, दोनों के लिए कॉमन है। तो जो सब्जेक्ट आपका पीजी का है, अगर वो दैट इज होम्योपैथिक सब्जेक्ट, देन यू हैव टू बी श्योर दैट वो सब्जेक्ट आपका, उसके क्वेश्चंस अच्छे जाएं। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, देन यू हैव टू मेक प्रेफरेंस ऑफ योर सब्जेक्ट्स, है ना। Like you have seen that why UPSC had given the list of subjects, and in that forensic medicine and toxicology at last, and practice of medicine on top, or I think material medica is on top, something. So it means that the preference of the questions will be the same. So if I open the list of subjects, so you can easily understand that on the top, materia medica and theraps, then practice of medicine, then repertory, then organon, then homeopathic pharmacy, then gynae, pediatrics, surgery, then all other 4-5 subjects are there. So it means that the number of questions will be more from the higher, more in the upper 8 subjects. So I am advising you, you prepare, if you can prepare for the upper 8 subjects. So more questions you can attempt, like materia medica, practice of medicine, repertory, organon of medicine, homeopathic pharmacy, gynecology, pediatrics, उसमें ही आ जाता है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ही आता है, एंड सर्जरी। यहाँ तक का तो आप, बल्कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, क्या नाम है, पीएसएम भी आती है, पीएसएम तक आप मान के चलो, बाकी 3-4 की भूल जाओ, बाकी 3-4 नीचे वाले जो भी हैं, आई थिंक दे विल गो 2 to 3 क्वेश्चंस, तो उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड यू यूटिलाइज योर एनर्जी इन द अपर 7-8 सब्जेक्ट्स, इनमें से जिसमें आपने पीजी किया उसको ले लो, ओके, एंड रेस्ट ऑफ ऑल जो भी आप कर रहे हो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उसको आप कवर करो, बिकॉज ये तो हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं कि आ रहा है, तो कुछ तो हमने तैयारी भी की है, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है इसको लेकर के। आप ये समझो कि आपका ये एक प्री टेस्ट है, क्योंकि अभी आपके पास एक अटेम्प्ट और रह रहा है जो अलाइड सब्जेक्ट्स का है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक प्री टेस्ट देने का मौका है, so you can easily understand the method of the questions also, and the pattern of UPSC also. So from top 8 or 9 subjects you will prepare, this is my advice, and in which subject you did your PG, ठीक है। Now this is for the preparation, in the for the 6 days, as I am saying. Now what about exam? Means on 5th number what I will do. Now let us cover that part also, है ना। So and for this I will give one more thing for this, that please keep 2 to 3 hours for revision. Please keep 2 to 3 hours for revision reserved in these 6 days. What you have studied till now, you please revise and give time to that, 2 to 3 hours separate. Then you start to read new things, or new things, solve new MCQs, okay, because revision is the mandatory thing. If you will not do revision, you will forget all things and jumble up हो जाएगा एग्जाम में जाके. So revision is very necessary. If you are not able to study the other subjects, please revise only. Keep revise 2 to 3 hours. Means in last 6 months you have, I think you have made notes also, or you made notes also, and you have the question bank and the answers also. So you please revise those in 2 to 3 hours. Then if you have time, then you attempt more MCQs for the other subjects,
So this is very important point. Don't forget to revise, especially materia medica, practice of medicine, these things. And now when I come to the exam, about exam, so as we all read in the this notification also, that there may be the question of 300 marks. So there is a possibility of 100 questions, because 100 multiplied by 3, so 300 marks will be there. And the most important thing is the 1/3 mark negative marking of each wrong question. Means they will deduct 1 mark for each wrong question. So beware of this thing. कभी कभी क्या होगा, आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करके क्वालिफाई कर जाओगे. लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर लो, जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर लो. क्यों अर्शद भाई? जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर लो उतना हमारे चांसेस हैं, बट उतने चांसेस हमारे नहीं है. देन यहाँ क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम हियर, दैट योर रिटन एज वेल एज इंटरव्यू, you will get the accumulative total of written as well as interview, then merit will be decided. So written is not only written, it is qualifying for the other categories, but they will also consider in the merit formation. So if you secured 200 marks out of 300 in written and secured 50 marks in the interview out of 100, then your total will be very good. So as much as you will achieve or you will secure in written, it will be beneficial for you. But for that, please keep it that there is a negative marking for each wrong question. Suppose you attempted 30 wrong questions and you are reaching up to 230, 240 level, then immediately 30 marks will be deducted from your 230 total. So your total will be 200. So don't do this. I am saying again, don't attempt casually, don't attempt those questions by chance. तुक्काफिकेशन नहीं करना है, और ये अपनी आदत बनाओ, अगले टेस्ट के लिए अपनी आदत बनाओ. I am not saying that you will qualify. I am not in the ways that you will qualify, you all will qualify or you will qualify. I am just saying you that this is your pre-test. So go without fear, with relaxed mind, clear goal. Okay, don't bother about things कि होगा कि नहीं होगा. That's the other thing. ठीक है ना, आप जाओ, आप करके देखो, होगा कैसे नहीं होगा. बट क्लियर माइंड में रखना है, डोंट अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चंस और don't attempt those questions which you are thinking that these are difficult or you are not sure about that. Now one other thing you have to keep in mind, that I am saying 100 questions because there is no where it is written that how many questions are there, but tentatively I am guessing that it may be 100. So for 100 questions you have 120 minutes. For 100 questions you have 120 minutes, mean 1 minute 20 seconds. That is fair enough for the entrance for the UPSC. 1 minute 20 seconds is very good. So 100 questions, 3 marks each questions, 300 marks, 1 mark negative marking. Other thing is 120 minutes you have. Okay, these two things are there. Now what you have to do means, please adopt this methodology. Others also please on your camera so we can interact. Please adopt this methodology, that when you will start to attempt the question, you please read those questions carefully, because sometimes it happens we didn't read not, accept, these words, which of among following are not, like questions are there na, which are of the following are not an artery or not a vein kind of question. So please read carefully these words, accept, not, these things.
The first thing is you have to read each and every question carefully. Read it twice. Second thing, you attempt those questions in first instance where you can clearly know the answer, or you can say that yes, I know the answer of this question 100% correct. So in first instance, you attempt those questions which are easy for you. And mind one thing, that in UPSC the questions are looking very easy but very confusing, especially in cases of Mathematica. So they are giving, if you have read first 2-3 lines and you marked, you will be wrong. So please read it up to last line, because the difference will come in the last line also. So don't be in a hurry that I will read the first 2 lines and I will click. No, if you are sure, then also please read till last line. So please be careful, read properly whole question and attempt those questions in first instance for which you are sure. Okay, so suppose you have attempted 20 questions, 20-30 questions where you are sure. So now the second attempt, you will move for those questions which are conceptually based, or you can say that by the eliminating method you can reach to the answer. The first one was that there is no need of the eliminating method. You know the answer. What is the antidote of this thing? You know. So no need to eliminating method. The second thing is that you don't know the answer, but you know the answers of other options. So this is the eliminating method. So in the second instance, if you are knowing answers of 3, it means that you can easily get the correct answer. Okay. So by eliminating method, second instance में आप you will attempt by eliminating method, and in third instance you will again check. In third instance, you will attempt only those questions where you are sure about 80, 70, 80%, and those questions are the tukification, but not more than 5 questions. You keep reserve of 5 questions, only 5 questions for that. Only attempt 5 questions. Can you hear me, बच्चे? Can you hear me ना? हाँ. एक बार बोल दो, कोई बोल दो, yes या no? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Yes, sir. So only attempt 5 questions where you are sure 70, 80% or 80, 90%, because we can take a risk of 5 marks minus 5 marking, but we cannot take risk more than that. Okay. So I think it would be better to not attempt wrong questions, क्योंकि उसी से मेरिट में डिफरेंस आ जाएगा. किसी ने अगर 50 गलत कर दिए तो कहां चला जाएगा, आपको पता है कितना नीचे चला जाएगा. तो ये आपको क्लियर व्यू रखना है कि आपको जितने आ रहे हैं उतने करने, एंड यू आर ऑल well qualified doctors. You already cracked AIPGT. Some of you already cracked. एक minute. Already cracked many exams, entrance exams. So I think you will crack it also. But it is different from AIPGT pattern, because UPSC is different and AIPGT is different. In UPSC, they are asking hardcore academically questions. In UPSC, they are asking clinical based questions. So I think these are the tips for you for 15-20 minutes, and it will be helpful for you. And be calm and composed, relax, don't bother. सृष्टि का अंत नहीं होने जा रहा, ठीक है. अब अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो बताओ, वरना तैयारी में लग जाओ. हाँ आशिमा बोलो प्लीज.
Good evening, sir. How was the feedback? How was my tips? ये थोड़ा सा बस. आवाज कट रही है. हेलो. हाँ बोलो. सर पिछले यूपीएससी में हर जगह 150 क्वेश्चंस थे. क्वेश्चंस हुए प्लस दिस इज पेन एंड पेपर ओएमआर शीट होगा. तो सर 2 आवर्स आपसे बहुत. आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे पूरी नहीं आ रही है. आप थोड़ा सा एक बार और या तो माइक चेक कर लो आप अपना, या इसको पास ले आओ फोन को. सर इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ, आप कैमरा ऑफ करके ज्यादा अच्छा है. हाँ बोलो आप. सर मैं कह रही हूँ कि पहले जैसे 150 क्वेश्चंस आए थे हमेशा यूपीएससी में. पहले हर पेपर में 150 क्वेश्चंस है. तो वो भी 300 मार्क्स के थे. वो भी 300 मार्क्स का था पेपर. अच्छा. हाँ तो 150 फिर तो और ही मुसीबत हो गई. 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन. एंड सर प्रॉब्लम ये है कि ये पेन एंड पेपर है ओएमआर वाला. मतलब पहले जो हमने दिया था वो कंप्यूटर बेस्ड होता है. कंप्यूटर बेस्ड था. बहुत जल्दी हो जाता है सर. लेकिन ओएमआर विद 150 क्वेश्चंस 2 आवर्स में इट इज अ मतलब बहुत ज्यादा वो है. ये मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा इशू है. टाइम तो मिलेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे इसमें आपको थोड़ा सा तो मिल जाएगा. देखो ऐसा है कि अब अडेप्टेबिलिटी तो करनी पड़ेगी. या तो एक दो ओएमआर शीट वगैरह मार्केट से लाके कर आके देख लो, प्रैक्टिस करके खुद भी देख लो, क्योंकि वो थोड़ा सा जरूरी है. एक ओएमआर शीट जो है मिल जाती है आपको ऑनलाइन, उसको लो पकड़ो और उसको कर डालो फटाफट गोल घेरे बना के. तो क्योंकि वो टाइम तो बर्बाद करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. उसका ये है कि आप पहले एक बार उसके. एक बात और भी है कि लोग क्या करते हैं कि पहले इस पे टिक कर लेते हैं. वहां पे मिस्टेक ये होती है कि वो पेपर पे टिक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद ओएमआर भरते हैं. ये कभी नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा. क्योंकि जब आप ओएमआर भरते हो ना, आपके सामने अगर आप 6 पे टिक किया हुआ, आप कभी कभी 5 को भर देते हो. तो ये गलती कभी नहीं करना है कि पेपर पे आपने मारा और फिर आप 50 मारने के बाद 50 आपने क्वेश्चन मार दिए, फिर आप ओएमआर भर रहे हो. नहीं करना, साथ के साथ भरते चलो. साथ के साथ भरोगे तो सामने रहेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाता है. कई बार कई बच्चों का होता है ऐसा. तो तुमने यार, मैं तो वही टेंटेटिवली 100 लेके चल रहा था, तो तुमने तो और टफ बता दिया. अगर 150 अगर है 150 है तो भाई तो इसमें क्या, फिर इसमें यही है ना कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं है. इसमें यही है कि आप सॉलिड रखो और सॉलिड ही करके आओ. बहुत ज्यादा उसके चक्कर में मत रहो कि मैंने 150 में से 120 मार दी है. आई थिंक 100 का भी अगर टारगेट रहेगा ना, 105 का सही किया है अटेम्प्ट अगर आपने, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा. गॉट इट माय पॉइंट आशिमा? यस सर. anybody who want to ask? नहीं, ठीक है. मंजुला, ऑल इज वेल नाउ? यू आर कुछ क्लियर हो गया? जी सर, ठीक है तो सर. कोई बात नहीं, आराम से अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है. टाइम बचाओ भैया, अपनी पढ़ाई करो. बेस्ट ऑफ लक. आराम से एक शांत से कंपोज होकर के देना, अच्छा जाएगा. कोई उसमें बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और अपने पे भरोसा रखो. सर 20 डेज का टाइम दे दिया, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ है आज तक कि 20 डेज. अरे भैया आपको पीछे तो 6 महीने का दिया है टाइम. सर तब भी क्लियर नहीं था पैटर्न क्या आएगा. अलग तरीके से सोचा था, कुछ और ही हो रहा है. नहीं, उसके 1 महीने पहले जब रह गया था आने से 1 महीने पहले ही मैंने बोल दिया था कि भैया आप 12 उस पे लग जाओ. तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था. अब ये तो सबके साथ होगा ना. देखो ये तो जनरल चीज है, ये तो सबके साथ होगा. जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा. इसका मतलब मेरिट लो जाएगी, बहुत मेरिट हाई जाने के चांसेस नहीं है. अब उसी में खेलना है, सबके साथ वही समस्या है, उसी में खेलना है भाई. ठीक है डियर, बेस्ट ऑफ लक. मन से पढ़ाई करो. थैंक यू. बाय बाय. Bye sir. Thank you. Thank you sir.